Hello Shanesh. guys! Welcome Hello back to everyone. CKMD. Well, hello everyone. Welcome back to the second day of Fiqi AMD's international scrims, and today we have Group B of the Indian teams. We are in lobby with 53 players, and we are seeing lots of the really well-known players as well as underdog teams. So let's see what happens today. I am definitely excited, Atom. So let's look at all the team members and let's look at all the teams that have made it thus far. Atom, would you like to see some of your favorites, or would you like to pick some of your favorites from these people? सो लाइट आज की बात करी जाए तो आज के मैचेस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं कल के मुकाबले एंड देखा जाए तो आज भी काफी टीम यहाँ पे आ चुकी है जैसे वीएलवीटी की टीम मेरे को देखने के लिए टीम डायोड भी देखने के लिए मिल रही है मेरे को एंड काफी अच्छा प्रदर्शन आज भी देखने के लिए मिलेगा एंड वही बात जो मैंने कल बोली थी जो टीम्स जो कि अंडरडॉग टीम्स हैं जिनका नाम अभी चमका नहीं है वो इस मैच में चमकाने की कोशिश करेंगे जो हम सीरीज लेके आए हैं 2-3 दिन की इसमें चमकाने की कोशिश करेंगे सो देखना ये होगा कि आज वो टीम कौन सी है जो चिकन लेके जाएगी क्योंकि कल की वो टीम जो टीम नंबर 3 मेरे को एक्चुअली उनका टीम नेम नहीं पता बट मतलब उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया कि मतलब आउट ऑफ माइंड हो गया था भाई मैं तो कि मतलब ये टीम थी कहाँ सो आज भी ऐसा कुछ परफॉर्मेंस अगर देखने के लिए मिलता है तो इट्स ऑल गुड फॉर अस एंड और भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा Right, and guys, so before starting, let me just tell you about Fiqi AMD. So Fiqi is a very nice person. We met her, I think, a couple of days ago, and so far she's been very accommodating. She's been amazing, and she's enjoying your gameplay. She's enjoying the Indian competitive scene. Yesterday, after the match, we did have a good talk about the differences that you saw between Indian teams and international ones. And she said that we play more strategically, more tactically, and we don't like to lose even a single player. We don't take unnecessary fights. And that is what is making it so fun. So in the last zone, definitely we see those things come in. Now, can we look at the plane path, please, Fiki? Let's look at where the plane is taking us today. And Atom, would you like to explain this bit? यहाँ अगर प्लेन पाथ की बात करी जाए तो नोवो रिपनॉय की साइड से क्वारी की तरफ प्लेन पाथ जा रहा है तो जिसको भी मतलब क्लोज जो ड्रॉप्स हैं नोवो मिल्टा फार्म पोचिंकी प्रिमोस पेरिपियर मिलिट्री ये तो इजीली ड्रॉप पे जा सकते हैं बट जिसको भी दूर ड्रॉप से पहना जाए जैसे जॉर्जो हो गया रोजोक हो गया स्कूल हो गया यासना है लिपोव का हो गया सो एकमात्र सहारा गाड़ियां ही इनके लिए रह गई तो अभी और भी देखते हैं कैसे अपनी डेस्टिनी पे अपने जो टीम्स हैं वो पहुंचती हैं Right, and what's fun to see is that in the military base, we only see perhaps one team actually going for it. I'm not sure if they're actually aiming for military base, but it seems like they will be uncontested there. And the whole of military base, which is a very, very big place, all of the loot that is in there will belong to them. Should be really fun to see. And we have seen Team Diode go for this play as well earlier in earlier matches. Near Lipovka, they'll just drop off and perhaps they'll get a vehicle or so, and then they'll move further up north. Looking at team number 2, which has 3 players just it should be fun to see where they drop in because Query I believe has been VLVT's drop for quite some time. Even in the international matches they have dropped जी in Query, so it'll be fun to see if team number 2 is able to battle Query and battle VLVT and claim Query for themselves. देखो देखना तो अभी ये है कि वीएलवीटी यहाँ पे क्या अपनी क्वेरी को यहाँ पे डोमिनेट करेगी क्योंकि उनका ड्रॉप है ऑब्वियसली उनको सारे एंगल्स पता होगा कहाँ से कहाँ बंदे मारने हैं कहाँ से फाइट लेनी है तो देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे वीएलवीटी डोमिनेट कर पाएगी अपनी जो ओपोनेंट टीम को और देखा जाए तो यहाँ पे वीएलवीटी का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुका है एंड टीम नंबर 2 के प्लेयर के द्वारा तो देखो आई थिंक वो थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं बंदे को सो अभी लूट एकत्रित करी जाएगी प्लेयर्स के द्वारा एंड देखते हैं और कितने प्लेयर्स यहाँ पे नॉक होते हैं और कितने की कैजुअलिटी यहाँ पे टीम्स को मिलती है Yeah, definitely the first kill will be going to team 2 against team VLBT, and you must keep in mind that the Uzi in this part of the game, like the early game, is one of the best weapons that you could ask for in close range because of the high rate of fire and the damage that it can do. It will obviously shred your health bar like a bottle that's broken down. The water just drains away, so it's just like that, and it's no surprise that they won. But in the meantime, we do see VLVT second player go down as well to another team, and this should be fun to see. VLVT, who has been known to be an amazing team, has already lost 2 players. So I don't know what's happening with them, but the dynamics don't look as good as usual. So Fiki, talking to you,
do you think this game will be very aggressive considering we just saw fights coming in this early in the game? Iya, di sini tampaknya sudah terlihat kalau dua tim yang gugur ya, karena sebelumnya tadi ada sekitar, oh tidak, tadi sebelumnya ada 54 dan baru saja dua yang terbunuh. Kita lihat di sini ada yang di pojok dengan Slim, tapi tampaknya dia terdisconnect di sini atau tidak mengikuti dengan teman-temannya di sini. Dan juga tadi saya melihat ada yang menggunakan bendera Indonesia. Tadi ada di sekitar daerah ini, atau hanya orang India yang menggunakan bendera Indonesia. Wow, di sini Blue Reface sedang meluncurkan tembakan yang sangat cantik dan menghabisi tim 3 barisan. Kita lihat di sini ada Afina. Tadi baru saja Afina mengekill 1 di early game. Dan selanjutnya bagaimana dengan Atom? So मेरा मानना ये है कि ये 3 बंदों ने जो अपने ड्रॉप लोकेशन को छोड़ के दूसरे की ड्रॉप लोकेशन पे उतरे हैं, जैसे VLVT की यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन थी है ना, तो वहां पे उतर के उनको उनके 2 प्लेयर को डोमिनेट करना, मतलब उनको एक फॉल बैक पोजीशन पे मतलब छोड़ देना कि तुम फॉल बैक कर लो भाई, हम तो यहाँ के राजा बन चुके हैं। तो मेरे को लगता है ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है इनके द्वारा। तो देख अभी और भी फाइट्स यहाँ पे हो रही है। मैप अगर आप की प्लीज कैन यू शो द मैप वंस, या अगर और भी फाइट्स देखी जाए तो यहाँ पे काफी टीम्स अलग अलग उतरी हैं। मेरे को यहाँ पे ऐसा क्लस्टर कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा, बट एज पोचिंकी की बात करी जाए तो पोचिंकी के नीचे जो एरिया है जहाँ पे स्प्लिट ड्रॉप्स लोग लेते हैं आजकल, वहाँ पे एक सोलो प्लेयर दिख रहा है मेरे को। या यस लाइट, आप क्या कहना चाहोगे? Right, and definitely one of the interesting things to see in today's match will be obviously the dominance of unknown teams, because well, there you go, VLVT Norman will get a trade for his teammate, and they must be feeling quite angry because they are, they have some reputation now. They got to uphold that reputation and that pride and that prestige that they've built over the past several weeks. That is a huge responsibility, because even if it's just scrims, and here's the thing about being a pro gamer is that when you have a team and you've built a name for yourself, you can't ever let loose. You can't ever just relax and play, because if you don't maintain that prestige, then it's going to reduce the reputation. I mean, you're going to lose your reputation even in the smallest scrims if you don't perform. So it's a huge responsibility, Atom. I mean, I'm sure that these players would obviously have sometimes a second account or a third account even, to just roam around, goof around, and do things that are not something that will affect their reputation, जी, बट आजकल देखा जाए तो लाइट की बंदे ज्यादातर जो स्क्रीम्स होती हैं उसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम यहाँ उतरे तो ये कर सकते हैं, अगर अपन को ये ऐसा फाइट लेना तो वो ले सकते हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्रीम तो एक प्रैक्टिस है अपनी, है ना, तो इसमें अगर मर भी जाए अर्ली स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ कि हम लोग वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अपन को जब बड़ा टूर्नामेंट या कुछ हो रहा हो तो अपन कैसे उस चीज से निपट पाए या कैसे सिचुएशन को निपट पाए। जैसा कि मैंने बोला कि अभी जैसे ड्रॉप क्लैच हुआ VLVT का, अपन शुरू से बात कर रहे हैं VLVT की, तो मेरे ख्याल से वो अभी और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और भी देखेंगे कि कैसे वो डोमिनेट कर पाए, जैसे कि अभी 2 प्लेयर उन्होंने लूज करे हॉल फाइट में वहां पे। सो मे बी दे विल वर्क ऑन इट। Right. I mean, I understand where you're coming from, and obviously, the scrims are also a place where teams should actually test out their strategies. I mean, tournaments would never be the right place to test them out. But at the same time, you perhaps want to get in like further into scrims, because each scrim mostly has a structure to it, right? So maybe when you make it to the top 8, then you will be proceeding further with the international scrims, right? And you'll be getting your slot there, and that is where you can actually practice for a tournament, because that is when teams are actually try-harding, right? And you don't want to face easy opponents too much, because then your game will be laxed, and so you need some competition even in scrims. So these teams, even though they will practice all of those strategies, at the same time they do still need to perform. They do still need to get in the top 6, the top 8, whatever have you.
So yeah, that is definitely something to keep in mind, that maybe they'll experiment a little bit, but they can't be too relaxed about it. They still need to proceed further. तो इन द मीनवाइल यहाँ पे देखा जाए तो टीम नंबर 13 के प्लेयर्स यहाँ पे टीम नंबर 8 के ऊपर काफी शॉट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो रोटेशंस जो टीम नंबर 8 ले रही थी रोटेशन जोन के अंदर, सो आई थिंक वो उनकी रोटेशन काटना चाह रही थी यहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू Fiqi, so what do you think, which team will dominate this whole map? Because there are many teams in this Ya. slot list. Ya, ya, ya. Jadi di sini kita lihat timnya di sini semua baru ya. Jadi aku nggak bisa tahu tim mana yang sekarang saat ini bisa mendominasi dari maps tersebut. Tapi tampaknya dari beberapa tim semuanya pada menyebar pada satu maps. Tidak ada yang turun dalam satu tempat. Sedangkan pesawat tadi terjun dari Novranapnaye kepada Primox. Kita lihat di sini sama sekali belum ada perubahan pada member yang turun, masih 52 yang hidup sampai saat ini, dan di sini sudah mulai hampir memasuki fase kedua, tinggal 2 menit lagi. Dan selanjutnya kita akan mendengar apa yang what do you think about this, like, because it's still 52 live right now, yeah. That's Yeah, right. definitely. And we are moving in to the 10-minute mark. We are approaching the 10-minute mark, and that means that we will see the end of the second zone coming in soon. At the same time, talking about Team DE, let me just give you a little bit of background on these people. So, Team DE or Team Diode was one of the first teams to be formed, and they had quite a bit of a run in the international scrims. They had quite a bit of a run in the ROG tournament that recently happened as well. But we will talk about team number 2. In the meantime, Blurry Face will spot an enemy. He will try to chuck a grenade in there, and Team VLBT's TDF, who just got revived very recently, already had a skirmish with team number 2 before, so they are enemies. They already have a blood feud. So let's see if team number 2's VLVT's TDF is able to pull something off here. It will be incredibly difficult considering that his teammates are further away, but he will spot a player and he will take him down. What incredible control. I mean, it wasn't him that got him down, but definitely the health was lost to TDF and will get revived here. I think Avinash is his name, so Avinash will get revived here. But it will be difficult for VLVT to actually completely eradicate them from the map at this point. So, Atom, moving on to you. Who are you placing your bets on between the two teams? Both have 3 players, but 1 player is down from team number 2, obviously. तो अभी अगर बात करी जाए तो प्लेयर्स के मामले में यहाँ पे जो एडवांटेज है वो VLVT को मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 नॉक यहाँ पे निकाल दिए VLVT ने टीम नंबर 2 के, एंड सोलो मैन स्टैंडिंग है। एंड वहां यहाँ से बात करते करते यहाँ पे जो स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, टीम नंबर 2 यहाँ पे पूरी की पूरी एलिमिनेट हो गया। VLVT जो कि मेरे को काफी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, आपने भी देखा है, शुरू से खेलते आ रहे हैं। एंड यहाँ से जो पहला नॉक उन्होंने जो निकाला था, वो छोटी सी जो एक एंगल से जो नॉक निकाला, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके द्वारा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है। Definitely, and Team VLVT is not a team that you want to mess with. They have the experience and they will not let you off if you take a fight with them. So they're definitely not the forgiving types, and they've just proven that here. And we will look at Team EX, and I'm not sure what the team is called exactly. Forgive me for that, Team EX, but let's look at the situation. Where are they placed? They are outside the zone, and I think this is Whitey Slim Whitey's fanboy match, buddy. I mean, if you're gonna take the name, might as well play the game. Not sure why you would just stand there, but all right. We see SSQ's Lusty being revived here, and SSQ again one of those teams that made it to the semi-finals and unfortunately could not make it to the final of the ROG tournament. We know for a fact that they play very well, right, Adam? We have seen them perform very well. यस 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 एंड इनके आगे अगर देखी जाए तो AMX की टीम है जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मेरे को देखने के लिए मिलती है। एंड जब भी मैं क्लासिक वगैरह खेलता हूँ तो ये टीम हमेशा मेरे को डोमिनेट करके जाती है। सो आज देखना ये होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट जन को ये डोमिनेट करती है, और जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट जन को भी यहाँ पे इन्होंने डोमिनेट कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी टीम थी। नेक्स्ट जन जैसा आपने बात करा कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे, एंड फाइनल तो नहीं मतलब पहुंच पाए, बट वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अपन लोग सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं, वो भी एक बड़े टूर्नामेंट जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है। सो देखा जाए तो अभी
जोन जो हो गया है शिफ्ट, सेकंड जोन जो बन चुका है, एंड रोटेशंस यहाँ पे जो गटका के थ्रू यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है टीम्स की। एंड टीम नंबर 16 के यहाँ पे जो 3 प्लेयर्स हैं ऑक्टो की टीम के, एंड वो भी अच्छा होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे वाटर सिटी का इलाका, आई थिंक। या सो देखना ये होगा कि अभी कौन सी टीम्स नेक्स्ट, मेरे ख्याल से जो जोन बनेगी, आई थिंक अगर हार्ड शिफ्ट लिया तो कैसी जोन बनेगी, एंड कौन सी टीम वहां पे जल्दी रोटेट करती है या होल्ड अप एरिया करती है। सो मेरे ख्याल से अगर बात करी जाए तो ये वाटर सिटी के इलाके में ही जोन बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है लाइट को कहाँ बनेगी ये जोन, एंड कहाँ पे क्लस्टर हमें देखने के लिए मिलेगा ज्यादा? Right, leaving the zone aside for a bit, it was hilarious to see that Lusty just got dropped down from the revive flight and then he got ran over and then finished off with an M249. So that was really, really painful to see. I mean, that guy just got revived and still got taken down almost the instant his feet touched the ground. So not a very good position. Definitely we'll be feeling the heat a little bit, and Slim Whitey's doppelganger will get taken down by the blue zone. Talking about Team 15, Team 15's war. there you see it. There you have it. Just out in the zone, praying for his life. Maybe his teammates won't even care about him at this point. Now let's move on to someone more interesting, someplace more interesting, like team number 3's. I think NB77. I think this is the apartments. Is he in the apartments? Yeah, I'm pretty sure he's in the apartments area. Would be fun to see if they are able to spot anyone, but I don't think there's anyone across the street from them, Adam. Moving on to Fiqi. So Fiqi, Yeah. what are you thinking of the competition so far in the game, or what is your take on the game so far? Ya, di sini sudah mulai banyak juga yang menghidupkan teman-temannya ya. Tapi baru saya 10 yang tergugur dari pertandingan kali ini, dari 52 dan tersisa 42 saja. Di sini ada tim 15 yang cukup banyak killnya pada kali ini ya, ada 5 kill. Dan sekarang sudah menuju ke fase kedua pada tim 15 di sini, dan ada red zone di area mereka. Kita lihat di sini ada di tengah dengan tim biru, tim 1 mendekati tim 16. Kita lihat apakah akan ada pertempuran pada kali ini. Tim 16, Okto, Lithium, granat dilemparkan. Oh, terkena granatnya kepada Okto. Healing, dan tidak terkena, baru saja tidak terkena. Oh, Aros. Oh, that was a great knock. Yeah. Bro, that was a team grenade. This headquarter guy was the one who knocked out Eros, his own teammate. So That's why I said that was a great knock. That's a granite lagi. It would be fun to see. I mean, Octophage is up in the squad house and he only has a Thompson. I mean, one of the best close range weapons of all time, undeniably. But let's see if he's able to make something out of it. He will take down one player. Ow! Oh my god, 2 Second player kills. as well. Two. Yeah, that Wow. was a great knock Okay. by them. Nice. And यहाँ पे देखा जाए तो Nice backup. 2 प्लेयर्स यहाँ पे जो टीम नंबर 16 के यहाँ पे फुल्ली लिट एंड नॉक हो चुके हैं, मर चुके हैं। जहाँ पे टीम नंबर 16 का एक ही प्लेयर यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या ये इस टीम नंबर 1 को यहाँ पे डोमिनेट कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ उनका भी एक ही प्लेयर यहाँ पे सर्वाइविंग हैंड रिवाइवल देने बैठे हैं, लिथियम वाइटी, बट नो दैट्स नॉट वर्क देयर। एंड यहाँ पे टीम नंबर 16 ये फाइट को अपने खाते में करते हुए, एंड ये सुंदर इलाका जो कि वाटर सिटी का अपने हक में करते हुए 2 प्लेयर्स की कैजुअलिटी के साथ। Well, it would be fun to see. I think he will have enough grenades to recall all of his teammates here, but Tej will get knocked down and taken down by Mota Bahut Whitey. I'm not sure if that is his name, but if it is, you're very funny. That's a very good name मोटा you have भालू, there. मोटा भालू। Mota Bhalu Whitey. Okay, man. Very creative there. Have never seen that before. But IMAX is one of those players who is up and coming. So it's yet to be seen if he has a really good team with him at this point. IMAX with that C2 M249. And here's the thing about the C2 one, right? You see those shields up in the air, Atom? Yeah. Those shields are Yes. going to protect him from all the bullets coming in from the front. And those are indestructible. So no matter how much punishment they take, they are not going to be taken down. And moving on to their positioning is quite questionable at this point because, well, we have a minute on the clock. Yet we have seen in the past as well that the teams that have the central position, the 4th and the 5th zone, they Wow. generally have more of an advantage. Right, Fiqi? Ya. Oh, mereka baru saja melewati
tim 9. Kita lihat apakah mereka akan mengejar dan meratakan tim 9 dari tim 3, Risi, Javax dan NB77. Kita lihat tim 9 di sini sudah mendahului mereka dan memilih untuk pergi saja menjauh dari tim 3 di situ. Dan tampaknya sudah mulai menjauh dan tidak akan terjadi perperangan tampaknya di sini ya. Di sini ada Risi tampaknya masih mengotot untuk mengejar Zoid OP. Lihat dari Zoid OP di sini. Sulit untuk melihat pertarungan mereka karena mereka menggunakan mobil. Dan katanya akan ada nerf untuk mobil ya guys ya. Itu sangat dibutuhkan sekali. Di sini ada X neutral yang terkenok di sini. Tampaknya dikenokkan oleh yang di atas. Oh. Oh, that So, sucks, like- Antrim, doesn't it? एक्चुअली आई वाज बिजी एंड मैंने देखा नहीं टीम फाइट्स में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, घर वालों ने बुला लिया। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीन चार टीम्स मेरे को जो दिख रही हैं एंड काफी मतलब अलग अलग पोजीशन पे दिख रही हैं। जो वीएलवीटी की टीम ऊपर दिख रही है वो हाइट एडवांटेज ले सकती है यहाँ पे। टीम नंबर 3 के ऊपर शॉट्स जरूर आने की कोशिश, वो शॉट्स जरूर लेने की कोशिश करेंगे एक्चुअली। एंड टीम नंबर 7 भी नीचे हमें देखने के लिए मिल रही है। सो देखना ये होगा कि ये टीम नंबर जो 3 है यहाँ पे स्कूल का इलाका पकड़ रही है। एंड जोन का भी अगर नजरिया देखा जाए तो जोन भी यहाँ पे ही बन रही है, सेंटर एरिया है ये स्कूल एंड अपार्ट। सो मेरे को ये देखना होगा कि जोन क्या हार्ड शिफ्ट लेती है या यहाँ पे ही कटती है सारी, बिकॉज I think it मैंने would be. Go on. या राइट। Okay, I think it would be really wise to get that height advantage right in this stage, because if the height advantage does not come into play, I mean, if the zone doesn't shift to the south of the existing zone, then they will just have to move. But if it does happen, then they have an established high ground. So it's a chance of probability, but it would be better, in my opinion, to be up there than down there. And Daku will take down Norman. I mean, Daku, we have seen him play quite well before, and VLVT is already an established team, so this will be a fight to see. This will be a fight that we will want to look at, because Kakarot, Daku, Ho-Ho plays can make something beautiful happen while taking down 3 of the enemy team members. TDF, Envy and Norman will get taken down. So it's yet to be seen if if Team Velvet still has a remaining member. Could you just check? I think Team Velvet did get taken down completely off the map. They were off the grid now, and it's yet to be seen. Well, yeah, Velvet has been taken down, Yeah, and VLVT. Team number 6 has the high ground advantage, the hill, the king of the hill, as they call it, right, Fiqi? Ya, di sini baru अगर saja Daku ya, atau अगर जोन देखा जाए तो जोन सीधा ही अपार्टमेंट में कट गई है लाइट। जैसा कि मैंने बोला था, अगर सेंट्रलाइज पे कट जाएगी, सेंट्रल एरिया पे कट जाएगी, तो सारी की सारी टीम्स जो अपार्टमेंट में गाड़ी ठोकेगी एंड जहाँ पे जो क्लस्टर अभी मचने वाला है ना, तो वो खतरनाक होने वाला है। एंड जो फाइट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, टीम नंबर 3 यहाँ पे स्कूल से अभी अपार्टमेंट में घुस चुकी है। एंड काफी टीम्स जो ऊपर के इलाके में हमें देखने के लिए, वो भी सारी अपार्टमेंट के एरिया को होल्ड करना चाहेगी। तो यस फिकी। ya, di sini ada kembali dengan tim 3 yang tadinya ada satu timnya yang terdisconnect. Di sini tampaknya tidak mereka berniat untuk menghidupkannya kembali. Tampaknya nggak bisa masuk lagi. Dan terkenok granat yang sangat cantik dilemparkan oleh tim 3 ke sini. The spray. There you go. Di sini masih ada tim 3 tersisa di sini. Kita lihat dari NB77 tersisa satu lagi. Apakah dia bisa menyelamatkan timnya? Kita lihat di sini dan terlempar bomnya begitu saja. Tidak jadi. Go like. Yeah, while this fight is going on, Motabalu's squad will get wiped out, and NB77, the last remaining player from his team, will have to face at least 2 members here. And his thing about apartments, it's infamous for having a lot of heal battles go on relatively later in the game. I mean, if squads do rush in, we might just see one team occupying one floor
and no fights actually happening. Everyone will just be going for Ouch. those heal battles and Oh swag my to god. easy. Definitely, you want to roll from that drop, mister. You want to save some of your health here. But if you get taken down like that to 24 HP, it will be your own undoing, and you can't really blame anyone for it. It was just a mistake that happened. And if you get taken down, that's gotta sting, that's gotta hurt. But he has healed Yeah. up, and Team Diode has two vectors, and Vector, one of the best weapons that you want in this range, along with the Uzi and along the likes of P90. Definitely one of the best ones, right? What do you think about it? Do you think that Swag to Easy still has a chance? Rather, do you think NB77 still has a chance with an M762 against two vectors, Atom? तो मेरे को लग रहा है वो उधर चांस तो बिल्कुल नहीं है टीम नंबर 2-3 के प्लेयर के ऊपर कि वो एक एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं है जो एक एडवांटेज जो वेक्टर के अगेंस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं है बिकॉज ऑफ कि उनके पास बैरल एंड मे बी अगर ये दोनों बंदे जो टीम नंबर जैसे कि डायोड टीम के बंदे अगर दोनों स्प्रे देंगे इकट्ठे तो मे बी मर सकते हैं जल्दी बट मीनवाइल यहाँ पे टीम नंबर 3 के प्लेयर ने अपने प्लेयर को यहाँ पे ऋषि को रिवाइवल दिया है एंड सो देखना ये होगा कि ऋषि लैंड कर पाता है या हवा में उनका फुर हो जाता है. And as we see, he has another green flare with him as well. So Oh. Yeah. he is actually recalling his teammates. Maybe he will stand a fighting chance then. I mean, the three players who were here originally are all called down, and I think they have their bodies on the ground. So it is a possibility. It is a possibility, but then again, keep in mind that you have other teams in this small area. They will be spraying down. Who plays with that L85A3? He needs to crouch or at least slide down to Oh. be able to get a really good spray there. L85A3 is a really stable gun, and then Rishi does get taken down by Kakarot, I think, who's of the same team as Ho plays. So their team will be securing one more kill and going for that positional points as well as skill points. They have a bit of an advantage over the teams. Javix, on the other hand, is still going down. So will he go down or will he go up directly? That's yet to be seen, right, Atom? देखना तो यही है जैसा कि मैंने ऋषि के बारे में बोला था कि वो ऊपर ही फोर हो जाते हैं या नीचे पहुंचते हैं. सो अभी जेवेक्स की बारी है. क्या वो नीचे पहुंचते हैं या ऊपर ही फोर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ की काफी टीम्स है यहाँ पे जो पोजीशनिंग काफी अपर एरिया पे एंड वो देख रहे हैं कि कहाँ पे बंदे लैंड कर रहे हैं. क्योंकि ग्रीन फ्लेयर एक ऐसी गन है जब भी वो चलती है सब बंदों का ध्यान एक तरफ हो जाता है कि मतलब वहां से ग्रीन फ्लेयर चली है, फ्री का किल हमें मिलना है और जो किल पॉइंट है वो मिलेगा ही मिलेगा ना. तो यहाँ पे टीम डायोड की बात करी है तो यहाँ पे उन्होंने भी एक प्लेयर शायद अपना रिवाइव कर दिया है एंड काफी अच्छा होल्ड कर लिया एरिया एंड टीम नंबर 3 का जेवेक्स अभी लैंड कर चुके हैं फाइनली. नीचे इनकी लैंडिंग हो चुकी है आराम से. एंड डाकू की बात करी है तो उसने भी किसी प्लेयर को अभी नॉक किया एंड एलिक्सर ओपी ने एएम की स्क्वाड के साथ यहाँ पे फाइट लेने की सोची एंड काफी क्लस्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. अगर जोन की नजरिया देखा जाए तो लाइट यहाँ पे जोन जो बिल्कुल ही अपार्टमेंट से हट चुकी है, जो एक हार्ड शिफ्ट जोन ने लिया है. मतलब सेंटर बन ही जा रहा है. उसके बाद एक तगड़ा वाला हार्ड शिफ्ट जो एरिया में लिया है एंड काफी मतलब अभी टीम्स जो है अपार्टमेंट से निकलेंगी एंड नॉक्स मिलेंगे एंड जैसे कि दो टीम्स यहाँ पे अपार्टमेंट में बैठी है क्या हमें उनकी भी फाइट देखने के लिए मिलेगी. इन द मीनवाइल यहाँ पे 3 प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं. यहाँ पे एक्स्ट्रा ओपी यहाँ पे जो सरवाइव कर चुके हैं इन टीम्स के बीच में एंड एम की स्क्वाड का यहाँ पे एक मेंबर जो कैजुअलिटी उनको मिल चुकी है एंड एक मेंबर को यहाँ पे भी रिवाइवल की पोजीशन पे बैठे हुए हैं. एंड देखना ये होगा कि जो ऊपर के अपर एरिया में यहाँ पे रोजोक की साइड बैठे हैं क्या वो अपने एरियाज को होल्ड कर पाते हैं या वहाँ पे टीम्स अपनी फाइट निकाल पाते हैं. And it'll be really fun to see because we have only 1 minute on the clock, and therefore it will lead to much chaos and lots of fighting just happening every single place because the area in the zone is quite small, and there are only like 1 or 2 viable places that you want to be in. You could hold the hills, it will give you an advantage, but against solid cover, that's not much of an advantage. One single grenade can knock out your entire team, and you definitely don't want to be in that place. So Mafia with the one remaining player because Andy and Swag has been taken down. He knows where the enemies are, right? One good grenade can actually give him much of an advantage, but I don't think he has any grenades left here at him. He has no utilities left, just 3 first aids, 5 bandages and 1 drink. So will he hold himself up here? I'm not sure why he would do it. Maybe he should just go for a revive. At this point it will be really difficult for him to do anything solo, but if he gets at least one player revived, that could lead to something here. Can we just look at where those teammates are revived? Fallen down, so we can probably try to understand his mindset, his mind play right now.
सो देखा जाए तो उसका माइंडसेट ये है कि क्योंकि टीम नंबर 3 है जो ओपन एरिया में आगे से आगे, तो वो इजीली इनके नॉक प्लेयर्स को देख लेगी। अगर ये रिवाइवल देने बैठेंगे भी, इनके पास स्मोक एंड यूटिलिटीज कोई नहीं है। इन द मीनवाइल यहाँ पे टीम नंबर 7 का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुका है एंड टीम नंबर 16 का भी यहाँ पे नॉक हो चुका है एक प्लेयर, जो कि पीछे जैसा कि मैंने बोला टीम नंबर 8 यहाँ से क्लोज इन करेगी ऊपर से। सो माफिया का ये दिक्कत होगी कि वो रिवाइवल तो नहीं दे पाएंगे ऐसा वहाँ पे, बट यहाँ पे स्मोक किया गया है माफिया के द्वारा एंड रिवाइवल भी यहाँ पे मिल चुका है आई थिंक। सो लेट्स टॉक अबाउट द टीम डायोड। कैन यू प्लीज शो द टीम डायोड वंस फिकी? या टीम डायोड के यहाँ पे तीनों प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है उनके लिए। एंड देखना ये होगा कि वो जो एक घर उन्होंने पकड़ा था साइड पे एंड वो होल्ड कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 8 की यहाँ पे फाइट हो रही है टीम नंबर 3 के प्लेयर्स के ऊपर एंड एएम का यहाँ पे शैडो यहाँ पे रिवाइव हो चुका है, वो ड्रोन से आ चुका है, फाइनली वो रीच हो चुका है नीचे, ऋषि की तरह ऊपर तो नहीं मरा एटलीस्ट। सो देखना ये होगा कि अभी क्या ये टीम नंबर 8 यहाँ पे अपनी जोन को जो पोजीशनिंग उनकी जोन में है वो अच्छे से होल्ड कर पाएगी या जोन के अंदर जा पाएगी। सो मूविंग ऑन टू यू फिकी, व्हाट डू यू थिंक व्हिच टीम विल गेट दिस चिकन डिनर? Ya, di sini tim 3 lumayan mantap juga ya di sini. Karena dari tadi banyak kill juga, terutama di NB77. Dia juga sudah menghidupkan 2 temannya lagi, namun sayang sekali satu temannya tidak jadi karena sudah di kill duluan sebelum mencapai lahan. Kita lihat di sini dengan tim 13 spray. Oh, sayang sekali NB77 terkenok di situ, tapi masih ada temannya Javex di sini yang tampaknya akan menyelamatkan temannya karena mereka berada di balik bukit yang cukup lumayan tinggi ya. Kita beralih ke tim 13 di sini, baru saja melemparkan molotov ke apartemen atas untuk melawan tim 16 di sini. Tersisa 1 saja Frostop dan tim 8 di sini masih utuh, 1 skuad. Kita lihat lagi menggunakan drone. Oh, di sana ada baru saja tim AK tadi terkena oleh zona. Kita lihat di sini tim 7 spray ke bawah. Oh, sisa 1 saja, tampaknya ada yang akan naik. Oh, tidak, di sebelah. Kita lihat yang sedang menggunakan shotgun di sana, DBS Frostop. Oh, kalah oleh spray dan Javex dari jauh tadi. Tersisa 5 saja. Kita lihat di sini tim 13. Sayang sekali tim Javex, tapi lumayan nice try. Di sini ada tim DE melawan satu orang lagi di sini tim 7. Kita lihat apa yang akan terjadi dengan tim ini. Kita lihat tim 7 melawan tim 13. Tersisa 1 saja. Apakah mereka akan menunggu zona ataukah mereka akan mengeras? Molotov di sini dilemparkan oleh tim 13. Kita lihat M4 dari jauh memantau. Oh, 1 bar lagi darahnya X Natural. 1 bar lagi. Apakah kamu bisa bertahan pada match round kali ini tim EX? Molotov dilemparkan ke bawah tampaknya, tapi tidak ada orang. Ya, sayang sekali. और Selamat चिकन जाता हुआ डायोड के खाते में। Nice. Really good Nice performance try, by yeah. Team Diode. 6 kills to the name, so they will definitely be having a really good positional point as well as skill points. And we have Andy with 3 kills, Swag with 1, and their first player with 2 kills. Moving on, I don't think any team has. Whoa. Oh well, Team AM. Talk about Team AM. They have 10 kills. Really good performance there by Brutal OP with 4 kills. Astrax with well, we'll see later on, but you did see who it was. So Kakarot's team as well with 9 kills, and Kakarot and Ligza both with 4. So you have to keep in mind 4 kills means 1 squad wipe. That is 4 of these players with hopes and dreams just crushed by one single player. Goes to show just how strong they can be individually.
So individual players combined together who make a strong team are almost unbeatable. So there you have it. That's the score for you guys. And this was match one of Fiqi AMD's international qualifiers for Group B of Team, well, Indian subcontinent. And moving on to you, Adam, how do you find the match? How do you think this match went? Because I never really expected DE to perform this well against teams like VLVT who made it to the finals. I think the semifinals, if I'm not sure, well, it was somewhere there, but Team Dio did not qualify. So they won this one, even though teams like VLBT were just playing around, but it was still a win that will earn some respect. मेरे को लगता है लाइट यहाँ पे जैसे टीम डायोड थी वो हमारी स्लॉट लिस्ट में थी क्वालिफायर्स में एंड क्वालिफायर में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तो बहुत ही निराशाजनक बात है उनके लिए बट दिस इज अ टाइम टू शाइन देयर एंड मेरे ख्याल से वो यहाँ पे जो अपनी जो गन पावर को इम्प्रूव करके आए हैं एंड अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करके आए हैं जो कि हमें देखने के लिए मिला इस पूरे मैच में काफी अच्छे प्रदर्शन से एंड जो कि दोनों प्लेयर पड़े थे उनको रिवाइवल दिया एंड चिकन तक अपनी पूरी स्क्वाड को जर्नी उन्होंने दिखाई वो जो जर्नी छोटी सी जर्नी है पूरे मैच की वो चिकन तक दिखाई अपने एंड मेरे को लगता है काफी अच्छी बात है एंड काफी निखर के इनकी टीम आ रही है एंड देखना ये होगा कि अभी कहाँ तक इनकी टीम पहुंचती है क्या ये अगले कोई अपकमिंग टूर्नामेंट में भी खतरनाक लेवल खेलती है या क्या करती है क्योंकि वीएलवीटी का अपन को पता है काफी एक्सपीरियंस प्लेयर एंड काफी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन वहां पे पीछे दिखाया बट एज अ मीनवाइल वो नहीं परफॉर्म कर पाए इस मैच में ज्यादा अच्छा बट 4 किल्स उनके भी खाते में थे मतलब कि एक स्क्वाड उन्होंने भी खत्म करी है ऑब्वियसली एंड टीम नेक्स्ट जेन की बात करी जाए तो उनका भी अभी मैंने ज्यादा कोई मैचेस देखे नहीं है बट इस मैच में मेरे को उनकी पोजीशन जो एंड जो फाइट उनकी थोड़ी सी निराशाजनक लगी क्योंकि क्लासिक प्लेयर्स में जब क्लासिक प्लेयर्स की बात आती है तो क्लासिक में वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं मेरे को बहुत बार मारा मैं अभी क्या बताऊं कौन कौन सी टीम ने मेरे को मारा मैं नूब प्लेयर हूँ मेरे को काफी टीम्स ने यहाँ पे मारा एंड एएमएक्स की बात करी जाए जैसा कि आपने बोला उनके 10 किल्स एंड #4 पे आई थिंक ना अगर वो चिकन कर लेते एंड 10 के मामले में उनके काफी अच्छे किल्स बन जाते हैं एंड देखा जाए तो वो जोन के बाहर ही एक हिसाब से मारे एंड जोन की जो डायोट ने वहां पे करा काफी अच्छा जो होल्ड उन्होंने करा जैसा कि मैंने बोला तो एक छोटा घर जो वो बिग बिल्डिंग ट्रिपल बिल्डिंग के पास जो छोटा घर उन्होंने होल्ड करके रखा तो काफी अच्छा प्रदर्शन बट एक टीम मेरे को जो निराश करी वो है टीम एक्स के जो आखिरी बंदे रह गए थे उसने जो वहां पे पीक करी एंड जो 1 HP रह गए तो वो एक उनके लिए बहुत ही चोक हुई वो प्लेयर्स की बट आई थिंक टीम डायोड दिस मेक दिस हैपन एंड काफी अच्छा परफॉर्म और भी अभी आगे करेंगे Right, Vicky, moving on to you, what did you think about this match as a whole? Did you like it? What was your take on it? Ya, pada match kali ini lumayan seru sekali ya. Tadi juga tim 3 juga yang satunya disconnect tapi ternyata dia bisa comeback pada pertandingan kali ini dan tidak terduga-duga yang killnya banyak tidak jadi #1 ya lumayan sangat menarik pada pertandingan kali ini tapi tidak sebanyak kill yang kemarin ya pada kali ini killnya paling banyak dalam satu tim adalah 10 saja tapi itu sudah lumayan bagus nanti kita akan menghitung semuanya dengan sistem point oke, like before we start we are gonna take a break for 10 minutes for open. Right, guys, so we will be taking a break for 10 minutes and the caster's desk will be returning back before the flight just takes off. So hold tight, take some popcorn, get some drinks and wait for us while we prepare more entertainment for you in the future. Okay then. Hello Fiqi, how are you doing? Your voice still in here. It's okay. All good. It's okay, we can chat. Yeah, we can talk. But how are you doing? Yeah, I'm good. I just get lunch before we are going live just now. There are 2 matches only na today? Yeah. Okay. Now I'm going to start a room and waiting for them to join. अपनी आवाज जा रही है ना लाइव पे? Oh, sorry. Okay, so Fiqi, what is your plan in the future with more tournaments and scrims? Because I had a few people come to me
and they were like, "Do you know any person?" Because they have a sponsor, and sponsor wants to uh, make some tournaments happen. They want to have some, competition happen. So they wanted me to find someone who can make rooms for them. So are you interested in, well, having a sponsored tournament on your channel? Is that Tournament. something you want? If Hmm? it's for from official, it's okay for me. But if it's the prize pool is from me, it's can the be happy no heart. No, 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 no. They will provide the prize pool. They will provide with everything, right? Yeah. They will do everything. You Mm. need to make rooms for them. You need to provide room cards, right? Because they Oh. cannot. Yeah, it's like that. Do you think it will be a good idea, or maybe you can take some time to think about it and let me know in the future? Yeah, maybe I need to think about it Right, right, before. right. I understand because it was happening today, and I was just like, huh, that seems like an opportunity. I would speak Yeah. to Fiki and see what she thinks about this. Yeah. And by the way, it's a really good animation there on the stream, starting from the left and the right. It's very, well, you get engrossed in it, don't you, Atom? Like, don't you think like this is something you can just keep staring at and not get bored? मैं क्या बोला अभी लाइट तेरे See को the like. See the like. इस बंदे को कोई भी बात करनी होगा ना कुछ भी छेड़ लेगा ये स्ट्रीम अगर चल रही है तो मेरी बात सुन रहे हैं ना बंदे तो ये बंदा कोई भी बात छेड़ लेगा अभी स्ट्रीम की बात लेके बैठ गया कि एनिमेशन कितना खतरनाक चल रहा है वेला बैठने दे भाई वेला बैठने दे थोड़ी देर और कोई- भाई तू कासर का यही रहता है ना ब्रो. यू शुड बी एबल टू टॉक ऑन एनी टॉपिक एंड यू शुड be able to make anything sound interesting. That is the ability that you should have, right? सो Right, देखा जाए Fiki? तो लाइट्स जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे सेटअप पे Definitely, एंड जो definitely. उनमें से अगर गौर करी जाए तो मैजिक की बात ये है कि जो एक लाइट है वो ऑपोजिट चल रही है वो 3 लाइट्स के एंड 6 मिनट का हमारे पास समय है अब 6 मिनट और बकचोदी कर लो जितनी करनी So when you talk about lights going opposite, it is very symbolic of how sometimes you have to go against the flow in life, and you have to be that one individual who stands out against the crowd. या that was a unique thing you think about this light No, but all I'm thinking about is on the left side, on the red side, right? You see the third light that is going opposite. On the right side, it is the second light that is going opposite. So all I'm thinking about is why did the person that made it make it happen this way? Like, couldn't they just go for a bit more uniformity? I mean, it just triggers me a little bit to see it's the third one on the left and the second one on the right. Maybe it's just a very small gripe, right? But come on, man, come on. We could have had greatness. So Unfortunately, couldn't. so you are all describe the like still. No, no, Piki, it's all good. It's all good. It's really beautiful, though. I love neon. I really love neon, so it really works well for me. You do? Fiki, is this everybody something that? wants to be my Yeah, enemy वो yeah. बोलना Well, चाह रही है लाइट की सब मेरे एनिमी है मैं अकेली पीछे जा रहा हूँ देख लो गाना गा रहा था अभी ये स्ट्रीम के पहले यही गाना गा रहा था अरे भाई गाना गाना मुझे बहुत पसंद है. Fiki, did you make this yourself? Like, do you do these things? Do you create these animations? Actually, my husband, you know husband. Mm-hmm. husband Yeah. Yeah. Actually, my husband okay do that. Setting Oh, that, so setting this so what do all. you do? Oh, nice. Yeah. So, what do you do? Like, streaming is your bread and butter, right? Because you have such a good equipment, you have such good, like hardware, and you're very entertaining as well. And you also have so many subscribers. So, tell me a little bit about your journey so far as a YouTuber. How has it been? When did you start? It's thought from early, you know. For the mic, yeah, microphone, we just use earphone and you know foam from like when you sleep there, foam, yeah. Your We bedroom?
Yeah. No. So for the microphone, Mm-hmm. we use headset. Headset. Right. So Headphone. those. No, she means earphones, like the Yeah. one that go inside your ear, right? Uh, Those ones. yeah, Okay, yeah, okay, yeah. okay. I I cut the Wire. headset. I cut the headset and I just use the mic and and we cover it with foam, so it's मतलब there. Acha. इसके कहने Oh, so का then you. मतलब है कि Yeah, वो we cover जब it with. उसके हेड उस पे आवाज मतलब माइक्रोफोन नहीं था बट वो हेडफोन का माइक्रोफोन बना दी थी कि जो उसके स्पीकर है उसको कट करके बस माइक्रोफोन ही यूज कर Yeah, दी थी we use हाँ, we एंड use the उसके ऊपर भी mic उसने फोम only. लगा दिया था ताकि वो हवा ना जाए उस पे. सो मेक हे शिफ्ट भगवान गाइस. फाइव Yeah. 5 minute crafts. 5 minute Yeah, 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 crafts, yeah, guys. yeah. That's right. We just use the foam to cover जुगाड़ूपंती it, and tada! You have a great voice in there. Nice, nice. Yeah. You तो can गाइस try. आपको इससे I'll देखने मिलता है definitely कि try that. जुगाड़ू मेंटालिटी. सुनो जो जुगाड़ू मेंटालिटी वो सब आपको इंडिया में नहीं देखने मिलती है. हर जगह पे या एटलीस्ट एशिया में तो आपको हर जगह पे ऐसे जुगाड़ू लोग मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड गाइस अगर किसी को ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. No Subscribe to promotion. this channel, boys. Yeah, no personal promotion today, just Fiki's promotion today. Right, Fiki? Yeah. Yeah, it's okay, guys. You can do Aw, it. thank you. Yeah. Little bit. हमें तो Okay, guys. मौका चाहिए था बस. We will take this opportunity. Thank you, Fiki. So my name is Light. My channel's name is Lightcasts. You can go look it up, or perhaps we will have Fiki, just share it with you guys in some form or another very soon. Let's hope for that. But in the meantime, definitely go check it out. I have interviewed lots of teams that you see here, and all of those teams are pretty entertaining, pretty good people, really fun to talk to. So definitely check them out. And joining me today is Atom. So Atom, what can you tell me about your channel, your content, and what to expect there? सो अगर किसी को भी मेरी कास्टिंग अच्छी लगती है या लाइट ने जो मेरे को अपॉर्चुनिटी, यार मैं अपॉर्चुनिटी ही कहूंगा इसको, रोज रोज करता रहूंगा तेरे को भाई कि तूने अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को, ठीक है. तो जो इसने Bye. अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को कास्टिंग करने के लिए, भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मेरे को ऐसे बड़े चैनल पे मेरे को कास्टिंग करने को बोले, क्योंकि मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एंड ये मेरा सेकंड डे है एज वेल, है ना. तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. एंड किसी को भी मेरे को सपोर्ट करना है या लाइट को सपोर्ट करना, लाइट ने अपना चैनल बता दिया आपको, मेरे को तो लाइट का चैनल ही नहीं पता. ओ भाई ये कर लो. लाइट गेमिंग ना, इतनी अपॉर्चुनिटी. लाइट कास्टिंग लाइट क्या, कास्ट. लाइट कास्ट, सॉरी लाइट कास्ट. LIGHT मैंने space सब्सक्राइब कर रखा है CAST. बट मेरे को नाम एक्चुअली याद नहीं है. लाइट कास्ट. सो उसको भी सब्सक्राइब करो एंड सुपरस्टार एटम को सब्सक्राइब करो जाके यार, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि कल से मैंने लाइव स्ट्रीम करना शुरू करी है, परसों से, एंड काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का. एंड मेरे को लगता है कि आप और भी रिस्पांस दे सकते हो, क्योंकि इतनी खास वॉचिंग तो आ रही नहीं. बट अगर आपको चाहिए लाइट और एटम एक ही चैनल पे एक ही लाइव स्ट्रीम पे, वो भी गेम प्ले के साथ, तो जाओ सब्सक्राइब करो अभी सुपरस्टार एटम. हाँ, सब कैपिटल्स में, क्योंकि अगर आप छोटे में लिखोगे तो एक आ जाएगा जिसके शॉर्ट्स वीडियोस है और वो थोड़े से वियर्ड से हैं, तो आई वुड नॉट और वो मैं नहीं हूँ, और वो मैं नहीं हूँ, मैं पहले बता. ऑल गुड दो, ऑल गुड. तो मैं सोचूंगा आगे अभी कोई अच्छा कंटेंट आने के अपने चैनल पे, एंड काफी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ में अगर कोलैब कर पाऊँ कि अपनी स्ट्रीम पे लेके आऊँ, सो काफी अच्छा अभी होने वाला है नेक्स्ट. सो प्लीज से सब्सक्राइब कर देना जाके, एंड लाइव स्ट्रीम जरूर से देखना मेरी और लाइट की. Yep. And guys, we are returning to the room in just about a second. And Fiki, let's look at the room. Let's look at what's happening here, shall we? Let's look at how many people have joined in, and we shall be. Oh. Technical difficulties, guys. Hold on for a second. We need to connect. Wait, I'm calling technical Guruji. Hello, technical Guruji. There you go. Oh, by the अच्छा way, दुबई में हो. Fiki, by the way, if you look at your camera feed, right? If you look at your camera feed, then on your top right, there's the red stripe, right? The red accent from the gaming chair, and it looks like you have a sword on your back, like in the animes. Yeah, you pull it out and then just cut people out. That's what it looks like. Yeah. Oh my god. Ninja Fiki, let's go. Sword. That would be fun to see. Yeah. Also, Fiki, can we? Eesh.
I mean, you already are also wearing the mask, so definitely Yeah. suits the ninja theme here. Hey, Fiqi, can we have it full screen, please? The screen's a bit small, if that's okay with you. Okay. Wait. Yes, Yeah. let's go. It's- I think Lusty Supra and what's his name? NASCAR? Oh, we can go now. NASCAR? Oh, We well, will start now just soon. maybe we should wait just 1 minute or so because there Okay. were 51 people. Yeah, there we go. There we go. I think Oh, we should start now. Risi. Wait a second. Don't start. Is it Team 3? Risi, you know? Okay. The one So, YouTube Bruh. ये Slim. सेम लॉबी है ना YouTube Live? Slim. 3, 2, 1, start. Okay. We go now. All right, boys. We go now. The plane is taking off. Basically, Okay, we go now. it's getting fueled in. The fuel is Red getting Steady pumped. India go. And there we Okay. have it. Just 1 minute. The pilots are doing the last flight checks. I mean, they're checking the equipment. There's the walk around that pilots have to do before the flight takes off. So definitely that will be going on. And passengers are on this island for some reason. They are not being loaded in, and they will be magically teleported into the plane, where they will proceed to then fall onto the ground in Erangel 2051. It will be an amazing match today, Atom, with the second match coming in for Group B of Fiqi in AMD's international qualifiers. And joining me today, again, as I told you, is Atom. And my name is Light, and we will be your host for the second match as well. So, Fiqi, how do you feel about this game? Because we did see Team Diode win the last one. So, what's your take on this? Do you think they will be able to perform that good as well in this one? Ya, tampaknya pertarungan kali ini nggak bakal jauh-jauh dari hashtag yang barusan ya, karena kemarin juga hashtagnya juga hampir sama-sama aja performanya dengan yang sebelumnya. Tapi kita akan melanjutkan dengan mencoba 2 kali pertandingan untuk mereka, karena akan tidak adil jika hanya 1 kali pertandingan. Jadi mereka pasti ada yang tusun, ada yang tidak ngekill, karena kill point juga di sini dihitung. Terus ada juga yang mati kena zona, ada juga yang crash. Jadi makanya kita melakukan 2 kali match untuk 1 kali pertandingan. Di sini kita lihat pesawat meluncur dari SMB ke ujung hospital. Kita lihat di sini sudah mulai ada beberapa tim yang turun. Tampaknya di sini tim sisa akan turun ke arah hospital dan range. Kita lihat apakah mereka akan menyebar. Di sini SMB hanya 1 tim saja, dan tampaknya di sini ada 1 orang yang nyasar ke sini, dan dia hanya 1 Zoid OP, hanya 1 di timnya. Hanya 1 orang satu-satunya dalam squad dia. Kita lihat di sini, apakah semuanya sudah pada turun? Oke, semuanya sudah turun semua, dan alhasil mereka semua sudah menyebar ke pinggir-pinggiran dari lompatan pesawat yang sudah tersedia dari sini. Atau how about you? Atau how about you? देखा जाए तो मैंने जो पिछले मैप में जो पिछला मैच था अपना, अगर वहां से देखा जाए तो जो VLVT की टीम अपनी क्वारी पे उतरी है, अभी सच मेरे को नहीं लग रहा कोई वहां पे उतरा है। एंड एक टीम मेरे को यहाँ पे क्लोज ही दिख रही है। एंड बात करी जाए तो नोवो में 3 टीम्स उतरी है, वहां पे एक जो सोलो प्लेयर उतरा है अपनी टीम का, आई थिंक कुछ हो गया होगा कि उसके टीममेट्स जो टाइम पे ज्वाइन ना कर पाए। बट 10 मिनट्स बहुत होते हैं हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए, बट आगे से जरूर से गाइस टाइम पे ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला VLVT और यहाँ पे एक स्क्वाड और उतरी है, उन्होंने फॉल बैक कर लिया है। एंड VLVT ने अपनी जो क्वारी की जो अपने जो पूरी पोजीशनिंग जो होल्ड कर ली है अभी। एंड देखना ये होगा कि अभी क्या ये VLVT जो अपने जोइड ओपी ने यहाँ पे जेवेक्स को नॉक करा, एंड ऋषि ने इन मीनवाइल उसको फिनिश कर दिया। एंड कोई भी यहाँ पे रिवाइवल का पॉइंट तो था नहीं, दैट सोलो मैन स्टैंडिंग देयर। एंड मेरे को अभी VLVT की मैं बात कर रहा था, एंड देखना ये होगा कि VLVT ये चिकन लेके जा पाएगा, क्योंकि पिछले जो इनकी परफॉर्मेंस थी काफी मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी लगी, थोड़ी बहुत कहीं कहीं बुरी लगी। बट कोई भी टीम बुरी नहीं है, एंड किसी को भी अपन गलत नहीं समझ सकते। एंड सब बंदे यहाँ पे ग्राइंड करने आए हैं, एंड तगड़े लेवल पे ग्राइंड करने आए हैं। एंड देखा जाए तो
जो जोन ने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ले लिया है पूरा की पूरा मैप का, एंड जो भी राइट में टीम्स उतरी एंड सबको अभी जोन के अंदर जाना है, एंड मूविंग टू ऑन टू योर लाइट, व्हाट डू यू थिंक नोवो में अभी कौन सी टीम यहाँ पे डोमिनेट करेगी? क्योंकि दो टीम्स यहाँ पे, तीन टीम्स आई थी एक्चुअली, एंड वन इज डोमिनेटेड, एंड दो टीम्स यहाँ पे रह गए, क्या लगता है? Right, and team number 3 and Daku's team were in Nova. But talking about team number 17, that is SE Player 1. I'm not sure what their team's name is because there is no consistent theme. But they will be dropping into this area called Milta, and Milta has a lot of good loot in the meantime. We will see in the kill feed that Elixir OP does get taken down. I'm not sure if he's finished just yet, but he has been taken down. Well, talking about Pain with that UMP, and the thing about UMP is, Atom, is that it's very underrated in the sense that it is actually really good. I don't think people have yet realized just the potential, Yeah. just the massive potential that it holds. He will find an 8x, maybe he will spread it with his team, like share it with them, but doesn't seem like he is able to get well, any snipers or anything of the sort. And in the Georgia poll, I think, in the Novo area, we have seen Daku and, that fight go on. So can we please move on to Novo and Novo see what reply. fight? Yeah, let's move on to Novo and let's look at that team going on. I think, wait, did Daku's team just get annihilated right at the very beginning? Because that team had a lot of potential, and yes, they're all dead. Unfortunately, they will meet an early demise by team number 3. And here's the thing about team number 3. The number 3, any team that has been in number 3 has been performing well. I don't know, it was Yeah. yesterday and today as well. We see the number 3 just really Number come 3. up there. And teams, I mean, if you want to be any team, go for number 3, because I think in Fiqi AMD's groups and her team at least, the number 3 is really lucky for you. So go for team number 3. If I were you, I would definitely go for it. I mean, man, come on, this game is about luck as well as skills. Yeah. But if you can somehow manipulate that luck factor and get luckier than the opponent teams, then that is an advantage you definitely don't want to lose out on, right? Just take the number 3, and we'll be seeing tomorrow as well who the number 3 team is, right, Atom? या तो अगर देखा जाए तो जो अर्ली कैजुअलिटीज जो पूरी टीम को मिली है, वो कि डाकू की टीम को पूरी की पूरी यहाँ पे वाइप आउट कर दिया है, एंड मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही, इनके अगर पॉइंट टेबल्स जो बनेंगे तो पॉइंट टेबल्स पे बहुत ही निराशजनक उनको नीचे के लेवल पोजीशन यहाँ पे पकड़नी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दो ही मैचेस थे एंड आपको बेस्ट अपना देना था इन दो मैचेस में। पहले मैच में मैंने उनको देखा, काफी अच्छी पोजीशनिंग तो नहीं निकली, बट एटलीस्ट उन्होंने वीएलवीटी की टीम को होल मतलब पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे डोमिनेट किया था, एंड काफी अच्छा उन्होंने डोमिनेट किया था, एंड मेरे को नहीं लगता उनके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे नेक्स्ट जन की टीम हमें इन द ओपोनेंट ऑफ द नंबर 2 टीम यहाँ पे हमने देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे जो कि नॉर्थ सिटी पे। सो काफी अच्छा होल्ड कर रखा है टीम नंबर 2 ने भी, एक थोड़ा हाइट एडवांटेज जिसको बोलते हैं, वो गॉड बिल्डिंग की एक होती है, एक मान्यता होती है कि गॉड बिल्डिंग पकड़ ली तो अब गॉड बन गए हो भाई, तो वो एक गॉड बिल्डिंग पकड़ गए। इन द मीन वाइल ऋषि ने यहाँ पे जेविक्स को रिवाइव दे दिया है नोवो रिपनो में, आई थिंक। सो काफी अच्छी बात है, एंड टीम नंबर 2 के प्लेयर्स यहाँ पे कुछ फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं विद पानी के द्वारा, यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश, एक काफी ऑफ गार्ड एंगल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखना ये होगा कि क्या वो यहाँ पे कोई नॉक निकाल पाते हैं या क्या कुछ कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कि दो प्लेयर्स जो टीम नेक्स्ट जेन के काफी क्लोज हैं टीम नंबर 2 के, एंड 2 प्लेयर्स जो अपना लूट एकत्रित करते हुए थोड़ा अलग डायरेक्शन में वो भी बैठे हुए हैं। सो let's see क्या होता है, and moving on to you Fiqi, what do you think which team will dominate this fight? Ya, di sini tadi mereka sedang membicarakan tim 3 ya. Katanya tim 3 sebelumnya itu chicken di pada pertandingan yang kemarin, dan saat ini tim 3 juga baru saja meratakan timnya Daku yang pada tim nomor 6 tadi baru saja meratakan tim 6 dalam nomor tim 3. Nah, jadi bagi mereka tim 3 di sini dari Scrim kita lumayan hoki jika kalian menempati tim 3. Bagaimana dengan besok? Kita harus melihatnya, begitu kata mereka. Itu translate-nya. Nah, jadi sekarang tadi baru saja yang satunya bilang kalau tim yang hijau ini tadi flank sangat jauh melewati laut, sisi laut. Dan di depannya di sini next gen tampaknya tidak sama sekali, mereka tidak melakukan pertarungan di sini ya. Tim 12 tampaknya hanya memantau-mantau saja dan tidak sama sekali menembaki
dari tim 2 di sini. Di sini ada Mahakal di sini hanya Ya. sama dengan tim 12. Tidak, padahal mereka jaraknya lumayan dekat ya, hanya sekitar 200 meter, tapi tidak nyampe, malah hanya 100 meter, tapi mereka tampaknya sama sekali tidak melakukan pertarungan pada kali ini. Dan tim Next Gen tampaknya lebih memilih untuk mundur, guys. Di sini juga Next Gen yang temannya di sini ada Next Gen Ritvi juga jauh di pojok, padahal di sini tim 2 hanya beberapa saja, dan satu tadi sudah flank ke atas ke arah kiri. Padahal mereka jika ingin mengeras, mereka juga bisa mengalahkan tim 2 di sini. Wow, sayang sekali. Tim 12 tampaknya memilih untuk mundur. Kita lihat di sini ada tim 1 di sini, Lithiu Yete. Tampaknya baru saja dikenakan oleh tim 4 di sini. Lanjut. Right, so I would like to bring your attention to Team SSQ and how they are fighting. I think it is Lithium's team out in the open. SSQ is also, well, the team's name is Suicide Squad. That is what SSQ stands for. And as I told you earlier in the last match as well, we have seen great things from this team, and they have been able to perform consistently. So it's yet to be seen how team number 1's Lithium will get revived. And I think one of the best strategies right now is not to actually make a blockade, but would actually to just drag the teammate out of that area, because one of the things that you can do in this game is you can crash into your teammate and it will push them forward, right? So if they're out in the blue zone, we have seen teams in the Korean finals do this as well. They just drag their teammate from a vehicle, like using a vehicle, they drag them out and into the white zone from the blue zone. So that is one of the strategies that you can employ, and they could have done the same for them instead of having some damage to their car. So that is a strategy that teams are yet to fully utilize, but it is definitely viable and something that we would love to see in the future. In the meantime, we have a drop coming down, a yellow flare. I think it is Team Daku. I'm not sure which team that is. I think it's Velvet. Yeah, I think it is Velvet. Team VLVT that has the drop there. So it will be interesting to see how that fight goes on. Norman will get taken down from Team VLVT, and if we could just move on to Team VLVT, we would see an amazing fight happening. So Atom, would you like to look at this fight and see where they go from this point on? सो देखा जाए तो एक प्लेयर की यहाँ पे इनको कैजुअलिटी मिल चुकी है VLVT की टीम को, एंड काफी अच्छा इन्होंने जो ड्रॉप मंगाया था, बट आपको पता है ड्रॉप जब आता है तब बंदे भी भगे भगे आते हैं। मेरे को नहीं लगता इनके क्लोज कोई टीम थी, या इन्होंने या तो फिनिश कर दिया है वो टीम को, या तो मेरे को कोई ऐसा मैप पे दिख नहीं रही VLVT के पास कोई टीम। बट इन द मीन वाले यहाँ पे टीम नंबर 17 के प्लेयर्स की यहाँ पे टीम नंबर 3 के प्लेयर के ऊपर फायरिंग जो लगातार चल रही है, एंड यहाँ पे एक नॉक फिनिश यहाँ पे दे रहा है, एंड जो टीम नंबर 3 का यहाँ पे स्लैम इन आता हुआ टीम नंबर 17 के ऊपर यहाँ पे सेकंड प्लेयर टीम नंबर 3 का नॉक हो चुका है, एंड यहाँ पे टीम नंबर 17 के ऊपर दिक्कतें बढ़ती है बिकॉज ऑफ दैट HP, एंड 13 HP वो बंदे रह गए, एंड 2 प्लेयर जो घुस रहे हैं, एंड यहाँ पे 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट मिल चुका है टीम नंबर 17 का, एंड जो एक प्लेयर है पन्नू करके एक प्लेयर है जो काफी दूर है, एंड आई थिंक ये फॉल बैक करना चाहेंगे जरूर से, एंड पोजीशन के लिए खेलना चाहेंगे। बट द टीम नंबर 3 जो उन्होंने वहां पे पुश किया है, चाहे एक प्लेयर की उनको कैजुअलिटी मिल गई, बट दे विन दैट फाइट, दे एंगेज एंड कंफर्म दैट किल्स एंड ऑल, जैसा कि कल अपन को देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक किल जो उनके सामने ही है, एंड देखते हैं क्या वो फिनिश करते हैं या ऐसे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि कल वाली गलती जो दोहराई नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ कल काफी बंदों ने, जैसा अपन मिलिट्री में देख रहे थे लाइट कि कल एक बंदे ने नॉक कर दिया बंदा, बट दे डिडंट मतलब फिनिश दैट किल, एंड जो कि उनका किल पॉइंट उनके हाथ से बिल्कुल ही चला गया। बट देखा जाए तो किल पॉइंट गया नहीं था, वो जोन से मर गए थे एक्चुअली, थोड़ा सा लेट हो गए वहां पे इंजेक्शन उनको रिवाइव देने में। बट यही सारी गेम है, गेम की स्ट्रेटेजी है कि अपने किल को अपने कंफर्म करो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई आपको सेकंड चांस नहीं देने वाला, एक ही चांस है आप पे, एंड खत्म हो जाओगे आप, बस उस चांस में खत्म हो जाओगे तुम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीम नंबर 4 का यहाँ पे एक प्लेयर नॉकडाउन हो गया टीम नंबर 15 के द्वारा, एंड टीम नंबर 15 का भी यहाँ पे एक प्लेयर को कैजुअलिटी मिल चुकी है, एंड 2v2 सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है टीम नंबर 15 एंड टीम नंबर 4 के
प्लेयर्स के अंदर। एंड इन द मीन वाइल यहाँ पे हाथ में M249 जो कि एक बीस्ट गन है, आपको भी पता है M249 मतलब तट 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 चलाते जाओ भाई, चलाते जाओ। जैसे कि अपन देख रहे थे BR मोड में जो अपना जो चैंपियनशिप हुई थी कोरिया की, सो उसमें भी M249 इज अ बीस्ट गन हेयर। एंड क्या लगता है लाइट, क्या आप ये पोजीशन संभालना चाहोगे, ये फाइट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे? और Yeah, definitely. We have team number 15 versus team SSQ, and team 15 will be taking the L and they will be moving away because they have just two people and they know that team SSQ is amazing and they shouldn't probably engage and put the beast in a corner because the cornered beast is one of the most dangerous beasts out there. So definitely team 15 will be taking the L, running away from there. But yeah, it is fun to see how these teams, how this reputation, right? I mean, if they had pushed in, it could have been a win for them, right? Because they had the enemy team blocked in. So yeah, it could have been a good win for them if they had just pushed. But it's the reputation that you want to build. It's the name that scares enemies off. And SSQ definitely has that name now. Don't you think so, Fiki? It is the name that team wants to create so that the others don't even approach them. Ya, padahal tadi bisa saja mereka itu mengejar, meratakan tim 4 ya, tapi tampaknya mereka memilih untuk menjauhi dari tim 4. Sayang sekali. Di sini kita lihat mereka tampaknya memutar-mutari, masih menggunakan meta mobil. Di sini mereka memutar-mutari tim 4, tapi memutari rumah yang lain, bukan rumah yang ditempati oleh tim 4 di sini. Kita lihat lagi dengan di sini, di tengah-tengah di sini ada tim 15 tadi sudah mengekill 1, sedang memantau-mantau tim 12 di sini, ada tim next gen di sini, next gen, ada banyak sekali tim-tim yang termasuk kemarin mengikuti tim ROG dari turnamen yang kemarin, juga mengikuti Scrim pada Scrim internasional dari sini. Dan kita lihat di sini headquarter tim 1 baru saja tadi merevive temannya yang bernama Nares Jaat, Lithium, Rose. Di sini juga ada tim 5. Di sini ada tim 2, ada Mahakal. Mereka juga masih berjauh-jauhan di sini ya. Tampaknya yang di luar zona. Kita lihat di luar zona. Di sini ada Expanu tadi juga menghindari perlawanan dari tim 3 di ujung, dan tampaknya dia juga belum bisa menghidupkan temannya kembali. Menggunakan mobil menjauhi dari tim 3. Di sini tampaknya Javex menyadari kekaburan dari Panu. Kita lihat dari Javex yang mengendarai mobil sendirian dan teman-temannya yang lain mengikuti Javex dari belakang. Kita lihat dari tim 3 di sini, apakah tim 3 pada pertandingan kali ini akan hoki kembali seperti match grup A kemarin. Kita kembalikan kepada like. so yeah, just moving on to further the जो टीम्स यहाँ पे शोर की तरफ मेरे को देखने के लिए मिल रही है लाइट, सो मेरे ख्याल से उनका जो एक पोजीशनिंग उन्होंने ये सोच के वो शोर की तरफ पकड़ा है। एंड इन द मीनवाइल यहाँ पे पन्नू जो आखिरी में स्टैंडिंग था अपनी टीम का, वो भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है टीम नंबर 3 के द्वारा। ऋषि ने यहाँ पे उनको फिनिश कर दिया। एंड देखा जाए तो जो टीम्स शोर की तरफ बैठी हुई है, सो एक माइंड सेट से वो उधर गई है कि उनको पता है कि अगर जोन उधर कटा तो उनको एक एडवांटेज होने वाला, क्योंकि टीम पीछे से तो कोई आने नहीं वाली, बस उनको जो टीम्स दिखने वाली है वो अपने सामने ही दिखने वाली है। तो एक वो पोजीशन भी उनके लिए अच्छी है अगर जोन उधर कटती है। एंड द मीनवाइल एंड यहाँ पे गटका में भी एक टीम यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इनके सामने वो टीम जो हमें फाइट लेती हुई दिख रही थी, आई थिंक नॉट गेटिंग द टीम, एक्चुअली लस्टी की टीम थी आई थिंक, हाँ। तो लस्टी की टीम भी यहाँ पे सामने ही इनके देखने को मिला। एंड यहाँ पे काफी अच्छी रोटेशंस यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रही है जोन के अंदर। एंड दिस इज अ सेकंड फेज, आई थिंक अभी थर्ड फेज जो बनेगा जैसा कि मैंने बोला था, अगर शोर की साइड वो कटता है तो उनको पता है पीछे से कोई टीम नहीं आनी। एंड जो कि एकमात्र टीम है जो अभी जोन के अंदर, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाली है वो जोन की। एंड जो हार्ड शिफ्ट यहाँ पे जोन ने हॉस्पिटल की साइड लिया है, तो अभी रोटेशंस जो निकलेंगी काफी क्लस्टर हमें जो हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड काफी लॉन्ग रेंज फाइट्स एंड क्लोज रेंज फाइट्स यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। एंड
तो देखना ये होगा कि कौन सी यहाँ पे टीम यहाँ पे अच्छा होल्ड कर पाती है एंड कौन सी टीम यहाँ पे ज्यादा कैजुअलिटीज ले पाती है ना। तो क्या ये टीम नंबर 2 जो जिन्होंने वहां पे होल्ड कर रखा है अच्छे तरीके से, क्या वो हिल वो होल्ड कर पाते हैं या नहीं। सो मूविंग ऑन टू योर लाइट, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये जोन जो बना है इधर, सो क्या लगता है इधर, मतलब क्या टीम नंबर 2 यहाँ पे होल्ड ऑन कर पाएगी, क्या इनके लिए ये पोजीशन अच्छी है फाइट लेने के लिए या नहीं। Here's the thing. We see most teams go for an early rotation into the zone and they want to get the central compound. And keep in mind that this is, not scripted. So these teams are actually doing this in real time, and every one of them thinks that holding the central compound will be good. But unfortunately, there can be only one winning team, and we will see another squad bite the dust. We will see them go back to the lobby because there is no chance of revival. Every single one of the players is dead. Talking about team Yeah. 8, they are moving into the zone. I think they have already moved in and they will be going to the shore. It would be interesting to see how that would play out or how that would end up for them, because they will probably want to go along the zone, right? Edge to edge, as they call it. Yeah. But here's the thing, I don't think that will work out here because we have the height advantage in the central area of this zone, right? Of And course, if of course. the zone does them a favor and hold Yeah. the height advantage for them near the hospital hills, you remember that region? It has lots of hills there. So if they're Yeah. able to Yeah. hold those hills really well, I don't think the edge to edge will be working here, Atom. I don't think it will be doing them much favor, and that's why I told you it would be very interesting to see how that would play out. In the meantime, Lusty will take one player down. I think it is Team SSQ versus Team VLBT now. Yeah, will get taken down. He has an SLR with a 4x, not the best scope, but they should be taking down that drone, man. They should be taking down that drone so that, yeah, and Oh my as God. I call it, they will take it down. Definitely one of the best things to do, but it would have been incredibly difficult for TDF to do that with the Cruiser because the Cruiser is known for lots of recoil that it has. It is definitely powerful, but the recoil is certainly up there with all the other guns. So, Fiqi, do you think you could have done that? Do you think, well, do you think team number 1 will be able to get some kills here now? Ya, di sini tim 1 sudah lumayan menempati nampaknya hashtagnya juga sudah lumayan tinggi di sini, tapi killnya masih 0 dan belum belum pecah telur sama sekali pada match kali ini. Kita lihat di sini, ya, tadi yang mengkanokkan tim VLVT tampaknya dari tim biru. Oh, di sini tim biru juga sedang memantau-mantau dari pergerakan tim coklat di depan, dan mereka melihat tim 9 di sana di atas bukit. Mereka mengkonokan dia di balik bukit. Ya, di sini dia VLVT. VLVT sedang melindungi diri di balik bukit dan tampaknya menggunakan Groza kali ini. Groza dengan peluru yang sedikit lagi. Kita lihat. हाँ, तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो टीम नंबर 4 है वो आने तो नहीं देंगे वीएलबीटी को अपने कंपाउंड पे, बट वीएलबीटी यहाँ पे जोन तो बना लेंगे, इतना तो मेरे को कंफर्म था क्योंकि 4 मैन स्टैंडिंग है। एंड अगर बात करी जाए तो टीम नंबर 4 की यहाँ पे 3 प्लेयर्स वो शुरू से खेल रहे हैं एंड 2 किल्स उनके अभी तक हुए हैं एंड स्प्रे देने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे लगातार टीम नंबर वीएलबीटी के ऊपर हो रही है एंड देखना ही होगा कि क्या वो यहाँ पे नॉक दे पाते हैं एक को या नहीं। बट इन द मीन वाइल यहाँ पे देखा जाए तो वीएलबीटी अभी और ही अंदर दस्ती जा रही है एंड देखा जाए तो इनके सामने टीम नंबर 2 जिन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी है, वहाँ पे एक स्क्वाड आई थी एंड उनको भी डोमिनेट करके उन्होंने पोजीशन होल्ड कर दिया है एंड देखा जाए तो सेंट्रलाइज हो गया है सर्कल एंड टीम नंबर 2 अभी भी जोन के अंदर एंड जो टीम्स जो सेंट्रलाइज एरिया होल्ड करके बैठी थी वो भी अंदर। एएम की बात करी जाए तो यहाँ पे एएम ने जो आपने बोला था एज पकड़ा एंड देखा जाए ना इन मीनवाइल उनके ऊपर बाद में आते, पहले टीम नंबर 3 की फाइट यहाँ पे टीम नंबर 13 के साथ हो रही है एंड जो कि 1 प्लेयर नॉक कर दिया एंड 2 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव ऑफ टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 3 के यहाँ पे चारों प्लेयर्स आर अलाइव है। यहाँ पे एक और नॉक जावेक्स के द्वारा टीम डायोड को आई थिंक मिलता हुआ एंड आई थिंक टीम डायोड यहाँ पे अर्ली एग्जिट कर देगी इस मैच में, जो कि बहुत मतलब निराशजनक बात रहेगी बिकॉज ऑफ पिछले मैच के जो विनर विजेता रहे एंड आई थिंक अगर इस मैच में भी निकलता तो और बढ़िया होता। बट इन द मीनवाइल यहाँ पे ऋषि ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया है टीम नंबर 13 के प्लेयर को एंड यहाँ पे 1 एचपी कर दिया गया है एंड यहाँ पे टीम डायोड का खात्मा होता हुआ टीम नंबर 3 के प्लेयर्स के द्वारा एंड यहाँ पे इजीली रिवाइव इनको मिल जाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एएमएक्स प्लेयर की, एएमएक्स टीम की।
सो आपने जैसे कि बोला कि एज होल्ड कर रहे थे, क्या वो अच्छी पोजीशनिंग है या नहीं, बट एक एज होता है कि जोन के अंदर एज टू एज जाना, अभी बात फिर से मेरी रुक जाएगी बिकॉज ऑफ टीम नंबर 5 की यहाँ पे फाइट हो रही है। टीम नंबर 17 और 12 के सामने, टीम नेक्स्ट जन के सामने, एंड यहाँ पे Oh, काफी अच्छा यहाँ पे नॉक, यहाँ पे 2 प्लेस नॉक निकाल दिए यहाँ पे विद दैट 6 HP। दैट इज अमेजिंग विद द टीम नेक्स्ट जन परफॉर्मेंस। आई एम that's हेड्स ऑफ good. टू यू मैन, हेड्स ऑफ टू नेक्स्ट जन। ऋत्वी ने यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपनी टीम को दिया है। यहाँ पे 2 नॉक जो वो जो 5 सिंगल एचपी पे दिए हैं, मतलब खतरनाक। यहाँ पे सेकंड स्क्वाड का रशिन होता हुआ, टीम नंबर 3 का यहाँ पे टीम नंबर 12 के ऊपर रशिन होता हुआ देखना होगा कि ऋषि यहाँ पे फाइट निकाल पाएंगे। एंड लाइट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस फाइट वंस? Right, definitely. Rishi has a good angle. He has a grenade, and he knows the relative positions of those players, and he will be doing lots of damage to that player. He will probably need to heal up again. But let's see if Rishi is able to do some damage to Team Next Gen, who already has one player knocked out. And well, as we talk about at 47, their IGL does go down. So 2 players remaining, but do not underestimate these 2 players, because Ritvi with that M249 has done quite an amount of Oh, damage, but will get taken down by Supra from that hill. Supra with an amazing position there, and perhaps we'll see Supra with more kills with that DP. In the meantime, Rishi from team number 3 will get taken down, and the rest of his players are not looking good as well. In that position, you don't want to be there, especially when players like NASCAR and Supra from SSQ have that SLR advantage. Javix will take down another player, and so will Atrox. I think VLBT is in a fight and is looking pretty bad based on the kill feed. So it's yet to be seen if VLBT will survive. But unfortunately, they will not. They will get taken down. And VLBT with that end, it's not looking too good for them as far as positions are concerned. But I do think they got some kills in this game. So we'll see at the end how they performed. But in the meantime, Team 8's Q2 will be reviving the rest of his 2 teammates. They had a good fight, they had a good run, but now it's time to move on and look at where the zone goes. It's time to look yeah. at what happens further, because this will get really intense as time goes on. There are hills on both sides, and whoever is the king of the hill will probably take the win here. Of course, Right, of Oh, Fiki? course. because अगर देखा जाए तो टीम 15 के सामने ही यहाँ पे AMX की टीम एंड टीम नंबर 15 के चारों प्लेयर रिवाइव्ड हैं, मतलब चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं। एंड AMX प्लेयर यहाँ पे 3 प्लेयर्स यहाँ पे AMX के यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, एंड 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकडाउन, टीम नंबर 15 के प्लेयर्स को यहाँ पे 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकडाउन दे दिया। एंड एट्रेक्स ओपी को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी स्प्रे देने की कोशिश करेगा, एंड रिवाइवल पे बैठे हुए हैं इनके एक प्लेयर, एंड सिंगल प्लेयर को यहाँ पे कवर आउट देना पड़ेगा, कवर फायर देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को कि वो जो टीम नंबर 15 यहाँ पे रश इन ना कर पाए, क्योंकि 2v2 सिचुएशन। एंड आई थिंक टीम 8 यहाँ पे 3v2 की सिचुएशन बना लेंगी, एज सच आई सेड, एंड उन्होंने बना ली। एंड देखना ये होगा कि यहाँ पे ये टीम फाइट लेगी अच्छे से एंड यहाँ पे डोमिनेट कर पाएगी, बिकॉज ऑफ काफी हिल का इनको एडवांटेज होगा। नेक्स्ट जो किल्स जो इनको मिलेंगे अगर जोन इनके पास शिफ्ट हुआ, तो जो ओपन में जो इनके पास किल मिलेंगे हिल से बहुत खतरनाक होने वाले हैं वहाँ के। मीनवाइल जेवेक्स ने यहाँ पे वो किसी को नॉक कर दिया, एंड यहाँ पे फाइट हो रही है सुपर फ्रॉम SSQ आई Supra, थिंक Supra. ना, सुपरा सॉरी, सुपरा फ्रॉम SSQ यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एंड यहाँ पे काफी अच्छा 15 oh, टीम नंबर 15 के यहाँ पे प्लेयर नॉक हो चुके हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने करा। सच टीम नंबर 15 के 2 किल यहाँ पे उनके भी खाते में आ चुके हैं, बट टीम 8 वो यहाँ पे चूकेगी नहीं रश करने पे। आई थिंक उनको रश कर देना चाहिए, अभी तक नेड्स या यूटिलिटीज का यहाँ पे यूज जो उनको करना चाहिए। इन द मीनवाइल कोई और टीम्स को देखा जाए तो फिकी, इफ वी टॉक अबाउट अदर टीम्स, yeah. can you please show us other teams? Right, before that happens though, we will see Team 8 versus Team 15, and one of the players will go down. So they have to go into the zone. They have less than a minute on the clock when the zone starts shrinking. So it is a fight. It is a battle that both teams have to somehow survive. And here's the thing, if team number 15 decides to just blow up that Dacia that team 8 has, then team 8's hopes can get crushed, because that Dacia is the last key that they have to enter the zone safely. If they lose that Dacia, then they will not have a speed advantage, and the zone will damage them as well. So if team 8 and team 15 play their cards right, it should be relatively difficult for both of those enemy teams to survive. It's only a matter of who uses
their mind now, and Lusty definitely will get taken down. He's out in the open. You do not want to be spraying like that, my friend. I think SSQ has just 2 players remaining at this point, so it should be pretty fun to see. I think one of their players did get revived very recently from the revive flight, but on the hill is not a place where you want to fight, right, Atom? Yeah. I mean, Mahakal is also, I think, the last remaining player from his team, so it should be fun to see how he decides to take these fights. सो मेरे को अभी ये देखना होगा कि क्या जो टीम AMX है वो अपने जोन बना पाएगी, बिकॉज ऑफ टीम नंबर 18 का यहाँ पे 18 है आई थिंक सो, टीम नंबर 18 का यहाँ पे 2 जो प्लेयर बैठे थे जो उनके साथ फाइट ले रहे हो, उन्होंने अपने लिए जोन जो एकदम से बना लिया है, बट AMX को यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट मिला एंड सेकंड प्लेयर ऑल्सो नॉक डाउन हेयर, एंड देखना ये होगा कि जो गाड़ी में प्लेयर अभी जा रहा है AMX का ब्रूटल ओपी आई थिंक सो, एंड वो भी यहाँ पे फिनिश आउट होते होता AMX का खात्मा यहाँ पे इतनी ही मतलब इतना ही उनकी जर्नी थी वो खत्म होती हुई। एंड यहाँ पे देखा जाए तो टीम नंबर 3 जो कि लक मैटर करता है, आपने जैसा कि बोला लाइट 20 किल्स इस पूरी टीम के हैं एंड चारों प्लेयर्स अभी तक अलाइव, एंड यहाँ पे टीम नंबर 15 को भी ये दिक्कतें देते हुए एंड 21 किल्स अपने खाते में। हाउ इज दैट पॉसिबल मैन, इट वाज मतलब एकदम अलग ही लेवल पे ये टीम खेल रही है। टीम नंबर 3 यार मैं सच में अभी मान लूंगा कि टीम नंबर 3 ही लेनी है भाई हमें भी, लक बहुत अच्छा होता है भाई। एंड यहाँ पे 3 टीम्स यहाँ पे अलाइव है, स्टिल अलाइव है, यहाँ पे टीम नंबर 2 के भी चारों प्लेयर्स अलाइव है। देखना ये होगा कि क्या वो 4v4 जो टीम फाइट लेगी क्या वो निकाल पाएगी, या टीम नंबर 3 को यहाँ पे डोमिनेट होना पड़ेगा, या टीम नंबर 2 को, बिकॉज ऑफ काफी अच्छे दोनों ही टीम्स यहाँ पे प्रदर्शन दिखा रही हैं, क्योंकि टीम नंबर 2 ने भी वहाँ अच्छा होल्ड करा था एरिया, एंड जितनी भी टीम्स वहाँ पे आई काफी अच्छे तरीके से उनको डोमिनेट करा। बट जो टीम नंबर 15 का एक प्लेयर है उसको आई थिंक दिक्कतें हो रही है, या दिक्कतें हो रही हैं, एंड यहाँ पे 2 टीम्स आर स्टिल अलाइव। टीम नंबर 15 यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई, एंड यहाँ पे 2 टीम्स रह गई हैं। सो मूविंग ऑन टू यू Fiqi, what do you think who will win this match? Ya, di sini tim 3 lagi. Tim 3 sudah ngekill 20 orang di sini. Dan di sini ada Mahakal yang menspray. Oh, sayang sekali di sini Risi memasuki zona biru ya. Oh, sayang sekali di sini, tapi ada temannya, tampaknya temannya sedang membantu membackup temannya, tapi sayang sekali temannya sudah tidak bisa diselamatkan di situ. Kita lihat di sini tim 2 masih tersisa 3 dengan 1 kenok. Satu yang sudah terkenok dan 1 di Mahakal darahnya yang sudah sekarat ya. Tampaknya di sini sudah, dan SQ16 sudah terkenok lagi di sini. Blur ya, apakah tim 3 bisa memenangkan, dan tim 3 lagi yang memenangkan pertandingan kali ini. Nice one, nice guys. And there you have it, team number 3. Buddy, let's look at the number of kills. They have 24 kills from their team. Javix with 8, Zagara with 5. Yeah, Rishi with 5 and NB77 with 6. That is an amazing performance, team number 3. I mean, if I'm going to play as any team, it's going to be team number 3. I don't care about who says what. Team number 3 is the one thing I want to बात be. करना चाहूँ तो ये टीम एक काफी अच्छी टीम परफॉर्म यहाँ पे करके गई, एंड जो कि आखिरी में इन्होंने गलती करी, वो गाड़ी घुमा के वो जोन के बाहर चले गए थे ऋषि, बट यहाँ पे 2v4 सिचुएशन हो गई थी, बट उस 2v4 को हैंडल करना, 2v4 कर देना अगली टीम को, एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनके द्वारा रही है। एंड जेविक्स ने वहां पे जो किल्स निकाले, जो नेड्स मारे भाई, वो तो अलग लेवल। एंड जो 8 किल यहाँ पे टॉप फ्रैगर आई थिंक यही रहेंगे इस पूरे मैच के, क्योंकि 8 किल इनके पास है, जेविक्स के पास, एंड टॉप जो टॉप किल्स की टीम जो निकल के आई यहाँ पे टीम नंबर 3। एक्चुअली टीम नंबर 3 कल भी आई थी, आज भी आई, एंड मेरे को नाम इनका पता नहीं चल रहा, जो कल थी उनका भी नहीं और आज थी उनका भी नहीं। सो हम जेविक्स की टीम, ऋषि की टीम ही बोल सकते हैं, एनबी की टीम भी बोल सकते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। अगर बाकी टीम्स के बारे में देखा जाए तो बाकी टीम्स में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी। टीम नंबर 2 के भी यहाँ पे 7 किल है, और टीम नंबर 2 ने वहां पे जो होल्ड करा था वो एरिया, जैसा कि मैंने बोला था, सेंटर एरिया जब होल्ड कर लेंगे अगर लोग, लाइट आपको बोला था कि काफी अच्छा उनके लिए रहेगा, बिकॉज ऑफ उनको किल्स अच्छे मिलेंगे, एंड जो इलाका उनको हिल का है, हिल से भी अच्छे किल्स मिलेंगे। बट एज ऑफ बात करी जाए AMX टीम, जैसे कि मैं इन द मैच भी बोलना चाह रहा था लाइट, कि आपने बोला था कि एज टू एज बंदे खेलना प्रेफर करेंगे वो वाले, तो
एक होता है सिचुएशन कि अपन जोन में एंटर कर रहे हैं, मान लो अभी ये जो जोन बना था गटका से अपन एंटर कर रहे हैं जोन के अंदर, तो गटका के पास ही एज पे रुकना। बट ये बंदों ने क्या करा, गटका से घूम के पूरा हॉस्पिटल के पीछे जाके एज पकड़ा। सो दैट वाज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर दैट, बट आई थिंक अगर वो उस जगह पे हिल्स पे रुकते, मतलब उस पोजीशन को छोड़ के हिल्स पे रुकते या और कहीं पे रुकते, तो काफी अच्छे इनके भी किल होते हैं एंड काफी अच्छी पोजीशनिंग ये भी निकाल पाते हैं। एंड जो गाड़ियों को, इनको गाड़ी जो चाहिए थी गाड़ी के अंदर जाने के लिए जोन में, वो तो उनका था, बट वही गाड़ी का अगर वो जोन के अंदर कवर बना के अच्छे से स्मोक करके अपनी फाइट को निकालते, सो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम देयर। सो क्या लगता है Definitely, लाइट? this या analysis is really good. Perhaps it is best done after the match. In the meantime, we will be thanking Fiqi AMD for today's two matches. This was Group B of Fiqi AMD's Yeah. international qualifiers for the Indian teams. My name is Light, and joining me today is Atom. So we have been your hosts for today, and I hope you guys enjoyed the stream. I hope you guys got some entertainment out of this, and it was fun being here. You've been amazing. You've been an amazing crowd, and thank you so much. We'll see you tomorrow with Group C, same time. So be here and let's just enjoy these things together, right? Yeah, Right, yeah. Fiki? या Yeah, that's right. That's right. Hey, you join तो All us right. tomorrow, right? Yes, tomorrow. Group C. Yeah, Group C. We'll see team number 3 again. Definitely. Why always team number 3? You know. I just want to know their names, team names. Please let me know after this live. I want to know the name of the team number three of yesterday and today, because they are really amazing, man. Yeah. Because yesterday भी हमने देखा वो टीम ने दोनों मैच लाइट चिकन निकाले, खतरनाक लेवल वाले किल्स के साथ। 15 किल्स एक मैच में आई थिंक 9 या 10 किल थे, ऐसा कुछ किल्स थे, आई एम नॉट श्योर। बट आज भी अगर देखा जाए तो पहला मैच टीम डायोड ने निकाला काफी अच्छा परफॉर्म करके, एंड जो थ्री मैच वो आखिर में रह गए थे फिर भी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, एंड डायोड टीम ने यहाँ पे चिकन निकाला पहला मैच। सेकंड मैच जो हमने टीम नंबर 3 को देखा, 24 किल्स मैन, इट इज Yeah. अमेजिंग मैन। मतलब ऐसा कभी कभी मैंने उसमें फाइनल्स में भी नहीं देखा। 21 किल एटलीस्ट आई थिंक मैंने देखे थे फाइनल्स में भी, आरओजी की चैंपियनशिप में। सो 24 kills is amazing, just amazing because of their team strategy, team synergy। काफी अच्छी उन्होंने जब भी फाइट ली, टीम नेक्सन से फाइट ली वहां पे भी निकाली, और भी टीम से फाइट ली वहां पे भी निकाली, एंड काफी अच्छा प्रदर्शन आज हमें देखने के लिए मिला। सो ऐसे ही और टूर्नामेंट या स्क्रिम्स देखने के लिए, सो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए फीकी के चैनल को, पीके अहमद चैनल को, एंड लाइक जरूर करके जाना स्ट्रीम को, एंड शेयर जरूर कर दिया करो यार गाइस। अगर हमारी कास्टिंग आपको बिल्कुल भी अच्छी लग रही हो एंड सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टा हैंडल तो मैं नहीं बता रहा हूँ, चलो छोड़ो इंस्टा हैंडल क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, सुपरस्टार एटम करके चैनल मेरा होगा, एंड लाइट का भी लाइट कास्ट करके चैनल है, तो बिल्कुल सपोर्ट दिखाना गाइस हमें। एंड थैंक यू फीकी फॉर Yeah. दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अस फॉर अस, एंड काफी अच्छा लगा हमें आपके साथ ये काम करके, एंड काफी अच्छा लग रहा है अपन को कास्ट करके, एंड अगर और भी आप मौका दोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी हमारे लिए। एंड थैंक यू फीकी, थैंक यू फीकी, Yeah. थैंक यू फीकी। Yeah, Just that's a my quick pleasure, correction man. here. या Ah, well, just a quick correction here, guys. So the winners of Team 1 is not Team Diode. DE does not stand for Diode. It is actually Oh, Destiny Esports. And oh, this I'm is what sorry. one of the yeah, this is what one of the players sent me, and I just looked at it after the matches were over. So we're very sorry, guys. DE is not Diode. It is actually Destiny Esports, and Destiny Esports are starting out their journey here. So best of luck to them, and Yeah. we will see the Group C perform tomorrow. So this is Light signing off. Take care. See you. Bye bye. See you guys.